Hello dear student, how are you? Student, today we will discuss MCQs of physics chapter current electricity part 3, and this video contain 10 MCQs. So let's start toward the MCQs. MCQs दिया गया है the current in the circuit show in the figure what will be the current in the circuit. तो जिस तरह फिगर में शो किया गया है तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Resistance between point A and B in the circuit shown in the figure is resistance between point A and B in the circuit shown in the figure is. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A neon flashlight cell with an EMF of 1.4 voltage gives a current of 15 ampere when connected directly to emitter of resistance 0.04. The internal resistance of the cell is. A neon flashlight cell with an EMF of 1.4 voltage gives a current of 15 ampere when connected directly to emitter of resistance 0.04. The internal resistance of the cell is. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Resistance of a wire on increasing its temperature will. Resistance of a wire and increasing its temperature with. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. Increase with the rise of in temperature. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An electric iron is marked 20 volts 500 watts. The unit consumed by it in using it for 24 hours will be. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the following figure, the internal potential is. In the following figure, the internal potential is. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. In liquid and gases, the current is due to the motion. In liquid and gases, the current is due to the motion. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. If 1 ampere current flows through 2 meter long conductor, the charge flow through it in 1 hour will be. If 1 ampere current flow through 2 meter long conductor, the charge
फ्लो थ्रू इट इन 1 आवर विल बी, तो राइट ऑप्शन है इसका ए। एंड लास्ट क्वेश्चन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम लॉ इज, तो इसका राइट ऑप्शन है। लेकिन इससे पहले अगर अब तक आप मेरे चैनल पर न्यू हो या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम लॉ इज, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेट लाइन is the graphical representation of Ohm law. Thank you for watching. This was the third part of electricity